Hello friends, I think that you are enjoying our class and your comments in the comment box has inspired us to move our foot ahead one step. And dear friends, as we are nowadays learning tense, in previous class we had discussed present perfect tense, in which you have given a ring that what the use of since and for, and in that case we are going to know today and that the use of for and since. Use of for and since. डिफरेंस प्रथम आम जाना फॉर एवं सिंस व्यवहार गुड़िक कौन रही जे प्रथम जाना जे फॉर कौटी व्यवहार होती सिंस व्यवहार होती आज वी हैव बीन acquainting with the two terms, that is for and since, in each and every sphere. Whenever true focus towards the morning newspaper, it is also there is painted in each and every sentence. There is a painting of for and since. If you don't know its use, then we may puzzle, so that we should not take any type of fear. In order to eradicate that type of fear, let's grow and true our focus towards the use of for and since. प्रथम आम जाना फॉर व्यवहार कौन और सिंस यूज कर प्रथम जाना फॉर व्यवहार टी कौन आम साधारण देखा गले जिते बड़े आम जिते गुड़िक सिक्वेन्स सहित आक्वेंटेड होती से समय जानते फॉर व्यवहार टी कौन फॉर टी कौन ना फॉर टी आम कहते गोटे एग्जांपल नहीं देखा जब कह ही हाज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years. Okay, next we can also use since. हम कही परिबा he has been learning English since 2018. Okay. Here two examples are clearly written. You can throw and focus, and from the examples we can draw the conclusion that where we have to use for and where we have to use since. जो बर्तमान पे दुरी सेंटेंस अछि ता वर्तमान के भल भार देखिबा एट लिखिबा he has been learning English for 2 years. एठी हम कोन करचंती ना for लागि जे 2 years पूर्वरु ए 2 years टा कोन साधारण भाबरे मनर क्वेश्चन आसे 2 years टा कोन ना एटा पीरियड ऑफ टाइम मन रखा जिते बड़े गोटे पीरियड ऑफ टाइम को बुझाऊ पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम कौन वैलिडिटी गोटे अवधि भितर काम करा पड़ता है से वैलिडिटी से वैलिडिटी आज यू आर क्वाइट अक्वेंटेड विथ दिस वैलिडिटी इन योर मोबाइल रिचार्ज. ओके नेक्स्ट नंबर 1 दैट इज कौन ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2018 एटी कौन यूज होना सिंस व्यवहार ए सिंसटा कौन पे 2018 year, the particular year has been mentioned. That means the second sentence gives a detailed study that at which starting point he has been learning English. बर्तमान पे देखिबा द्वितीय रूलटा जो सिंसटा व्यवहार होइछि सेटा पॉइंट ऑफ टाइम पे व्यवहार होइछि कोड पे ना पॉइंट ऑफ टाइम और वी कैन से आल्सो स्टार्टिंग टाइम स्टार्टिंग पॉइंट आल्सो यू कैन से ओके त नाम जानिले कोन ना फॉर यूज होछि फॉर यूज यूज ना गोटे पीरियड ऑफ टाइम एवं सिंसटी व्यवहार गोटे पॉइंट ऑफ टाइम गोटे कौन गोटे जिनसा स्टार्टिंग आरंभ होती सिंस व्यवहार कर कारण 2018 पर्टिकुलरली मेंशन होती एवं सेटा गोटे स्टार्टिंग पॉइंट देखा से सिंस व्यवहार करवा फॉरटा पीरियड ऑफ टाइम व्यवहार करवा चलते देखा यह किपरि भाव में विभिन्न न्यूमेरिकल एडजेक्टिव व्यवहार कर प्रथम आम देखा यूज्र फॉर व्यवहार देखा एवं से फॉर व्यवहार टी किपरि भाव में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव सहित संपूर्ण रूप से जड़ित ये कौन हो फॉर इज यूज्ड बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस मिनिट्स आम कहीपर ना आम कह फॉर 5 minutes for 10 minutes for many minutes for
several minutes এটা আমি ব্যবহার করলে কোন न्यूमेरिकल adjective plus minute পাই ঠিক সেই পরি ভাবে as here minute is used we can also use numerical adjective plus months. We can here mention numerical adjective plus months. We can say what? For 5 months, for 10 months, for many months, for several months. Here we can also use it years, 7 years, for 7 you should use for 5 years, for 7 years, for several years, for many years. Similarly you can also change here numerical adjective plus century, numerical adjective plus week, as here you can also mention that for 5 weeks, for 7 weeks, for many weeks, for several weeks you can use. Similarly we can also change it to the numerical adjective plus a or an when there is a required according to the use of article that you can take you can use for before numerical adjective plus numerical adjective means you can only use here a plus second a plus for a second, for a minute, for an hour, for a week, for a month, for a year, for a century. Also you can use a or an before the time derivation. Next one also you can use here as for can be used before, for can used before plus का साथ यूज करो long time किंबा मैं कहि परियो टी period of time व्यवहार करियो for period of time हमें व्यवहार करियो for a while, for a moment मध्ये यूज करियो for a moment हम कहि परियो dear friend please wait there I am coming after a while or before for a while please take a rest for a while. ओके से में फॉर व्यवहार करछंती एभर भी व्यवहार करिया फॉर एभरटा मध्ये फॉर पे व्यवहार करा होछि हला. नेक्स्ट हम जानिया फॉर मध्ये व्यवहार करियो कोठी ना लास्ट किंबा पास्ट सहित हम कहि परिबा फॉर लास्ट और पास्ट किंबा लास्ट प्लस एठा में व्यवहार करबा मिनिट व्यवहार कर परिया मिनिट्स एठा व्यवहार करबा वीक्स एठा व्यवहार कर परिबा मंथ्स हम व्यवहार कर परिबा इयर्स एंड सो ऑन. दैट मीन्स ईयर डिकेड सेंचुरीज also you can use here for plus past or last minute or weeks. Next also we can use here for plus season as a period of time also you can use it. And also here you came to know a lot about how and where we have to use for. Okay, next we have to throw our focus upon since. जति हम जानिले फॉरटा गोटे ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को बुझौची सेतपय हम फॉरटी व्यवहार करचंती एवं मन रखिया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव सहित प्लस किपरि भाबरे मिनिट सेकेंड वीक्स मंथ्स इयर्स सेंचुरी एंड एभली भाबरे व्यवहार करा जाउची. पुणी से मन रखा कथा लास्ट सहित व्यवहार करा जाउची फॉर द लास्ट मंथ, फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट मंथ, फॉर द लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी एंड सो ऑन. से भाई भाव में जो गुड़ी जहाँ डिस्कसन कले गोटे कनक्लूजन में पहुँचले जे फॉरटी गोटे ड्यूरेशन ऑफ पीरियड बुझाऊँगी से न्यूमेरिकल एडजेक्टिव अर्थात संख्या गुड़िकर ना था 5 months और 6 years युड़िक सब व्यवहार होता सहित आम जाना कथा लास्ट व्यवहार कर. द्वितीय आम जाना यूज ऑफ सिंस. बर्तमान आम व्यवहार कौन जाना ना यूज ऑफ सिंस. ये यूज ऑफ सिंस जाना प्रथम जाना सिंस आम टे पूर्व सेन्टेन्स कही ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2018 से सेन्टेन्स रु
आमको रिभेल एटा करा जायतिला जे सेटा पॉइंट ऑफ टाइम के बुझौतिला बा गोटे स्टार्टिंग पॉइंट को बुझाइतिला सेति पय आमे जानिबा स्टार्टिंग पॉइंट कोन हेई परिबो यस लाइक as used we for just before similarly we can use since for example you can say since plus day आम कहि परिबा since plus day that means कहि परिबा since Sunday since Monday since Tuesday since Wednesday and so on आम कहि परिबा since plus month okay since plus month आम कहिबा since January he has been learning English since January since February since March since April and so on से बोले हम मध्य since रे सहित आम प्लस year मध्य व्यवहार करि परिबा कारण इयरटा जते गोटे स्टार्टिंग पॉइंट को बुझौतबो जते बळे कि हम पूर्व सेंटेंस लेतले ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2018 हला ठीक सही प्रभाव रे आ गोटे हम सिंस टा को व्यवहार करबा ना सिंस टा मध्य हम व्यवहार करि परिबा ना पार्ट्स ऑफ ए डे गोटे दिन रो जो अंश अछि हम से कोन कहउचंती ना पार्ट्स ऑफ डे कौन सा पार्ट्स अछि म कहलो जेमिति हम कहि परिबा मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग since evening since noon since afternoon since daybreak since sunrise since sunset since tea light since any part of the day here we can use आज जानले पार्ट्स ऑफ डे मान पूर्व मध्य since टा को व्यवहार करि परिबा आमे मध्य since टा को सीजन पूर्व मध्य व्यवहार करिबा ताको भलो जानिया दरकार जे हम कहि परिबा since spring since autumn since summer we can also use आमे मध्य केतोडिक लाइफ रो विभिन्न इवेंट्स अछि तापर मध्य व्यवहार कर परिबा जेमिति हम कहि परिबा since his arrival हला जेमिति हम कहि परिबा since birth since death since marriage ताने एटा लाइफ रो पार्ट सब गोटे ताने ई बा इवेंट्स गुडे पूर्व मध्य हम सेंस गुडी को यूज करबा ता सहित हम आ कोडी यूज करबा ना मन रखिबा सिंस टा जते गुडे पॉइंट ऑफ टाइम के बुझो थाए बा टाइम रो गोटे कोनोसी ड्यूरेशन बुझो थाए जेमिति हम कहि पारे ओ क्लॉक 5 ओ क्लॉक एम पीएम एटसेट्रा एमान पूर्व हम कहि पारे 5 सिंस 5 o'clock सिंस 7 pm सिंस 9 am एमिति व्यवहार करि परिबा नेक्स्ट हम कोन करिया नेक्स्ट आप कोड यूज करि परिया आमे मध्य ए सिंस रे लास्ट एवं पास्ट मध्य व्यवहार करि परिया हम कहबरा सिंस लास्ट वीक सिंस लास्ट मंथ सिंस लास्ट ईयर आल्सो वी कैन यूज नेक्स्ट हम जानिबा जे आउ गोटे हम मध्य व्यवहार करि परिबा ना आमे मध्य आकु व्यवहार करि परिबा ना गोटे व्यवहार जानिबा कोन ना जते बेले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव थाए बट टाइम पीरियड थाए टाइम पीरियड प्लस टाइम पीरियड से कौन थी ना टाइम पीरियड प्लस एगो यूज हो से मन रखा जे से फॉर कदापि यूज हम ना है सेटा कारण नाम कहवा ही हैज स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश ही हैज स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश ब्लैंक्स अच्छी है 5 लिखाई 5 months एगो आम परीक्षा कौन करा कन्फ्यूज पड़ जा कौन पड़ जा ना आम कह सर हैज टोल्ड दैट वी हैव टू यूज फॉर बिफोर पीरियड ऑफ टाइम आम ये देखते 5 months गोटे पीरियड ऑफ टाइम बुझाऊँगी से ऑटोमेटिकली परीक्षा पड़े सीज थी और फॉर थी आम कौन व्यवहार करवा ना आम भाई परीक्षा सांगे सांगे नजरटा कौन फ्लक्चुएट बेसी हुए एग्जाम टाइम ताना आम लिखिदेवा ही हैज स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश 5 months पीरियड ऑफ टाइम सांगे सांगे बसैदा फॉर ना डियर फ्रेंड्स वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन दैट फैक्ट व्हाट इज दैट प्रथम जो लिखाई 5 months एगो दैट मीन्स 5 मास तले से इंग्लिश शिखवाटे आरंभ कर जो 5 मास तले जो 5 मास बर्तमान पे धर जून से जून जानुआरी धर आरंभ कर शिक्षाटा ताने सेटा पॉइंट ऑफ टाइम को बुझाऊँ
सेटा पीरियड ऑफ टाइम की कदापि बुझाऊ नाही से आम भल भाव में कनसीयसली देखार अच्छी ताको एनालाइज करार अच्छी एवं पिकअप करार अच्छी कौन यूज हम ये आम यूज करवा सिंस ओके डियर फ्रेंड्स आई होप दैट यू हैव लर्न ए लॉट ऑन द यूज ऑफ फॉर एंड सिंस नेक्स्ट चलते आम व्यवहार शिखा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज आम बर्तमान जानी जा जे बर्तमान पे आम प्रेजेंट परफेक्ट सहित संश्लिष्ट थिबा सिंस एवं फॉर व्यवहार जानिले एगुड़ी को आम जो विभिन्न मैगजीन्स पढ़ा यार व्यवहार को संपूर्ण रूप जापर द्वितीय आम बर्तमान पे जानिबा जे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आम जानी बर्तमान पे जानिबा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डियर फ्रेंड्स ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रो स्ट्रक्चर गुड़ प्रथम आम नजर डालिबा प्रथम है आफर्मेटिव आफर्मेटिव टाक आम कौन करवा आफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस बिफोर दैट वी हैव टू यूज बीन नॉट मेन वर्ब फॉर as if it had been present perfect we had to use main verb for 3 but as it is present perfect continuous subject plus has or oblique have plus been plus main verb for plus object okay as you have mentioned the for example we can say Deepak has been teaching English okay has been teaching English here is the example of subject has oblique have plus main verb plus been plus main verb for plus subject next one is negative रे कौन हम ना आम जानी नेगेटिव अर्थात नॉट अवेलेबल रहा निहती आवश्यकता सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट ओब्लिक हैव नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट हम कही परिबे एटी दीपक हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश ओके फॉर दैट इज एग्जांपल ऑफ दिस हियर वी कैन यूज ओनली नॉट और दिस verb has नेक्स्ट वन दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर में जानी जिते बड़े इंटरोगेटिव करवा बी वर्ब टी को सेंटेंस रो सम्मुख भाग को आनिबा जेपरि भाव में लिखाई सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्रथम आम हैज हैव टी को फ्रंट को नहीं आसवा आम मत जानते हैज हैव टी कोटी हैज व्यवहार हम कोटी हैव व्यवहार हम हैज हैव पर कौन कराई ना सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क भूलबानी कदापि क्वेश्चन मार्क देवाई कारण एटा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो इंटरोगेटिव सेंटेंस रे आम क्वेश्चन मार्क देवा निहाती भाव आवश्यकता रही अछि ओके फॉर एग्जांपल आम कहि परिबा दीपक हैज बीन टीचिंग इंग्लिश आम लिख परिबा हैज दीपक बीन टीचिंग इंग्लिश similarly also we can go to the next one that is called negative interrogative sentence okay a negative interrogative sentence रे कोन करबा ना सही परि भाबरे हम कोन करबा ना एठी रहबा has not oblique have not plus subject plus been plus main verb for plus object plus question mark okay ताको हम एग्जांपल मध्ये कहि परबा लिख परबा has not Deepak been teaching English okay ताने मध्य नेगेटिव इंटरव्यू जानिले बर्तमान पे आम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो चारोटी फॉर्मेट बा ड्रिल बा स्ट्रक्चर को आम पढ़ुचंती सेटा अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव विषय जानिले बर्तमान पे तार व्यवहार संपर्क में आम अवगत हवा स्ट्रक्चर गुड़ी को आम निहती भाव में गोटे नोट रे लिखिक रखा निहती भाव आवश्यकता रही कारण वी नो दैट स्ट्रक्चरल अप्रोच प्लेज ए की रोल इन reading, writing, speaking and listening skills
of English. Next one we have to throw focus, that is usage. Usage, you can say that usage of present perfect tense. Okay, sir व्यवहार कौन जानिबा? Dear friend, we have to know the usage of present perfect continuous tense. जेतरे मन रखिया, when an action started in the past, an action which started in the past and is continuing up to the present, and it creates a hope for future that it may continue up to future. But how far it will happen, we don't know. We have no depth knowledge idea about that. But we have to know that जते बेले गोटे एक्शन टे अतीत आरंभ हुए, अतीत को वर्तमान पर्यंत जारी रुहे एवं वर्तमान रु भविष्यत आड़ को जीवार संभावना मध्य थाए, ठीक सेतक बेले आम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करबा. ओके, आमे कहि परिया कोन ना, आम कहबा सी हैज बीन इल. सी हैज बीन इल since January. Okay, एठी हम व्यवहार करते she has been ill since January. Now we are in the month of June. जून मासर प्रथम सप्ताह रे हम पदार्पण करछंती, किंतु हम कहउछंती she has been ill since January. 2020 जनवरी मास ता देह असुस्थ अछि. ताने एटा कोन होइछ ना, एक्शन टा केबेटु आरंभ होला, जेहेतु आम जून मसरे अवश्य यहाँ कौन अतीत आरंभ होती वर्तमान पर्यटन जारी रही है. असुस्थता वर्तमान लगी रही है एवं ये असुस्थता भविष्य किसी दिन पर्यंत जारी रहे, केते दिन पर्यंत जारी रही, वी हैव नो आइडिया. इट मे कंटिन्यू, इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म और यू मे से दैट होप दैट इलनेस मे कंटिन्यू अप टू इन फ्यूचर एस्पेक्ट. ओके, से आम कौन करवा नेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करवा. नेक्स्ट हम जानिबा जे आउ कोड यूज कर परिबा. वर्तमान प्रथम जानिले प्रथम रूल ले जते गोटे एक्शन टे अतीत आरंभ होई वर्तमान पर्यंत जारी रहउथाय एवं भविष्यत रे मध्य ता जारी होबार बा कंटिन्यू होबार संभावना थाए, तते बेला हम फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करंती. द्वितीय विषय हम जानिबा जे जते बेले गोटे एक्शन अतीत आरंभ हुए वर्तमान पर्यंत चाली रहे. ओके, तार इन्फ्लुएंसटा अतीत आरंभ हो कि वर्तमान पे चली कि तार इन्फ्लुएंसटा वर्तमान पर्यंत बेसी रही. ओके, आम कहि परबा ही हैज बीन वाटरिंग इन द गार्डन. ओके, अतीत आरंभ होइछि किंतु तार फ्लुएंसटा वर्तमान पर्यंत जारी रही एवं भविष्य पछी जारी संभावना अछि कोन ना, तार वाटर ही हैज बीन वाटरिंग इन द गार्डन, बगीचारे से पानी रे आसुछि. तार वर्तमान सहित तार इन्फ्लुएंसटा केमिति रही ना, तार इन्फ्लुएंसटा एथि रही जे एक्शनटा जदिओ से पानीटा अतीतरू देलानी किंतु वर्तमान पे देखला बेलू शस्य श्यामल भरा सुंदर परिवेष्टित बगीचा जोठारे फूल फल महक एपर्यंत रही. कारण कौन, बिकज सी हैज बीन वाटरिंग, बिकज नाउ डेज समर वेकेशन इज गोइंग ऑन समर एंड द रेज ऑफ द सन इज गोइंग टू ड्राई ऑल द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. बट आज ही हैज बीन वाटरिंग इन द गार्डन, से जेहेतु बगीचार पानीटा जाइए बर्तमान पे फ्लुएंसटा बा इन्फ्लुएंसटा बा तार इफेक्टटा बर्तमान पे जारी रही है, जोटा कि आम कहते ही हैज बीन वाटरिंग इन द गार्डन. जिते गोटे एक्शन अतीत आरंभ हुए किंतु तार प्रभाव मध्य वर्तमान चले, अवश्य एक्शनटा बंद हो जाए वर्तमान किंतु तार प्रभावटा वर्तमान पे चलुव से आम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टी यूज करती. कौन एक्शन एटी एक्शन टी कौन बंद होती ना, से पानी देवाटा अतीत किंतु वर्तमान से देना किंतु तार प्रभाव अर्थात शस्य श्यामल भरा परिवेष्टित से बगीचा ए हसी उठुची, तार फलटा बर्तमान में देखुं किंतु अतीत आरंभ एक्शन किंतु बर्तमान बंद अच्छी किंतु तार इन्फ्लुएंस तार रिजल्ट तार प्रोडक्शन बढ़िया कर गोटे बगीचाटे उपनीत होगा. ये आम जानिले तार व्यवहार गुड़िक विशेषकर जाना व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड in the past and it is continuing up to the present platform and there is a probability of continuing in future. At that time we should come forward to use present perfect continuous tense.
थैंक यू। आम जाने नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़ा पास्ट टेंस विषय सीता पूर्व आम जहाँ पढ़ले तार स्ट्रक्चर को ड्रिल करवा तार फंक्शन को जानिबा एवं आसंतु नेक्स्ट क्लास रे पास्ट टेंस विषय आम आमर स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड फंक्शन को जानिबा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।